Hi guys, good morning. So am I audible to everyone? Just a quick check. And is the screen visible to all? Okay, great. So let's start with our today's session. We are scheduled for chapter 8 to 10 and 14 discussion. Shri Hari, please keep your mic on mute. Okay, so let's start with our discussion. So, this is basically the third class after the orientation class. So, this I am repeating for all those students who have just joined because results have been out in this week. So, there are many students who have joined us recently. So, basically, this is your third class after the orientation lecture. So if you have gone through your portal in which you have access to videos, you must have seen that we have segregated into different type of lectures. So we have core content lectures, we have past paper lectures, we have X series lectures, we have November 2023 sessions, and now there is one more here, that is April 2024 sessions. So you are basically, in case if you are missing any of the live class, so the point is that in case any of the live class you are missing, you can just check that live class in your April 2024 sessions. जो भी इस बार सेशंस हो रहे हैं वो इस वाले हेडिंग के अंदर अपलोड हो रहे हैं एंड रेस्ट जैसे जैसे आपके पास टारगेट्स आते रहेंगे वैसे वैसे यू हैव टू प्रोसीड. सो आई थिंक एक्सेस टू शेड्यूल इज देयर विद एवरीवन. सो सबके पास शेड्यूल आ गया था जिसमें वी हैव मेंशन कि ओके फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास यू नीड टू कंप्लीट दीज कंटेंट लेक्चर्स, you need to complete this number of lectures under this heading. X सीरीज का ये लेक्चर कंप्लीट करना है, नवंबर 2023 का ये लेक्चर कंप्लीट करना है. तो डिटेल टारगेट्स आपके पास आ चुके हैं. तो जस्ट ट्राई कि वीकेंड में आप अपना जो भी आपके पेंडिंग बैकलॉग्स हैं ट्राई टू कंप्लीट देम. एंड इन केस इफ यू वांट वी कैन हैव अ क्विक सेशन एज वेल. सो यू कैन जस्ट इन्फॉर्म टू द टीम दैट आई वांट अ क्विक one to one. In case if you are confused related to anything, we can have one quick one-to-one session as well. In case you feel I'm okay with the targets and I think I should proceed with the targets, go ahead with that. So the point is you should be at par with the class and just try to wrap up whatever has been done in these 2-3 lectures and start with your course ASAP. ठीक है. So guys, there is one orientation session which is still left to be uploaded. हमने बाकी के 2 sessions upload कर दिए हैं, but orientation session में there was some technical issue due to which audio and video were not in sync. So I have actually what the technical team has done is that they have tried to extract the audio from that, so that because that was really an important session and हमने कुछ और डिस्कस नहीं किया था except me speaking. So we have extracted audio from that and we will be uploading that session soon under your portal. So all those students who have just joined recently, I think the session is ready and till the time it's not being uploaded on portal, you can just ask for the YouTube link, private YouTube link of that particular session, so that you guys can be at par with other batchmates as well. And you know कि हमने जो अभी latest orientation लिया है उसमें हमने डिटेल में क्या डिस्कस किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. So do ask from the team that till the time that particular orientation is not uploaded on your portal, to give you the access via YouTube link of that particular session. ठीक है. रेस्ट बाकी के जो दोनों सेशंस हुए हैं they have already been uploaded on your portal and just try to have a look at that. So we are basically doing chapter 8 to 10. So बहुत सारे students को ये doubt था कि क्या हम directly chapter 10 पे पहुंच चुके हैं. I don't start from chapter 1. Chapter 1 to 7 is still untouched from my side. हमने सिर्फ अभी एक बहुत बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्लासेस एंड बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लासेस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, दैट इज फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल अंडरटेकिंग योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली 8 to 10 talks about different types of assets and chapter 14 is all your investment strategy and these are linked chapters. You may get a single question on 8 to 10, but there are very less chances that you get a question on chapter 14. So it's more or length either chapter 8 to 10 or chapter 8 to 10 and 14 combined. ठीक है. And you have to do very smart study. अभी you know कि IFO results have been out
for higher subjects yesterday only. So the results have been good. So it's up to you. अगर आप अच्छे से prepare कर रहे हो ना तो results are good. आपकी CP1 का जो मार्किंग गई है, बेसिकली द पासिंग मार्क इज 57. So any student who has 57 is considered as part, and students with less than 57 marks they have been considered as fail. So 57 marking कोई बहुत ज्यादा passing mark नहीं है. So if you are well prepared for the subject, if you perform well in both your exams, you can clear this exam. And there are students who have been just following the targets and attempting all their tests and assignments, completing everything on time, and they have really scored. Like, we have students who have scored 80-85 marks as well. So we are yet to upload our results on every portal, so do have access to the results as well, so that you also can get an idea कि किसने कैसा score किया है, and you can accordingly feel motivated कि yes, I also have to do in this particular attempt. ठीक है, so guys, be regular with your classes and make sure to complete your targets. That's the only thing that I require from your side is, because आपको भी पता होगा कि हाँ, मुझे लाइव क्लास अटेंड करने के लिए कुछ चाहिए and मुझे अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज देयर इज नो सेंस ऑफ अटेंडिंग द लाइव क्लास, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे and you cannot participate in question discussion जब तक आप अपना टू डू कंप्लीट करके नहीं आ रहे हो. So that is the reason कि मैंने कल क्लास नहीं रखी है, because there have been lot of new joinees in this particular week, so I have not kept the class tomorrow, so that you guys can take the class today, can understand what needs to be done, and then you have both your Saturdays and Sunday to complete your backlogs. So let's start with our first question of the day. Okay, so very easy question. Question 7, only first two parts. Third and fourth part are basically linked to your chapter 16, जो अभी तक हमने नहीं टच किया है. हमने सिर्फ different asset classes and factors to consider while choosing investment strategy. So question 7, first 2 marks, 5 marks question. A trust managing retirement benefits for a rapidly growing company has seen its fund growing significantly over the last 3 years. In this context, outline the factors that the trustees of the scheme need to consider while formulating their risk appetite. First 3 marks का question है. First part कह रहा है outline the factors. So outlining का मतलब है, as we discussed in the first class, you don't have to give me the details of all your points. Even if you mention the keywords, that works. Second part कह रहा है what should be the investment principles of this retirement benefit scheme. Now, in case you want to answer, for all those students who are live right now and attending it for the first time, in case you want to give your answer for this particular question, you can use your chat section and type. First thing, in case you are planning from India, so you don't need to type. You can just click a photograph and send it on Institute's WhatsApp number. I can just read out your answer from your photo as well. So अगर आप IFOI से अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइप यूजिंग योर चैट सेक्शन. अगर आप इंडिया से अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइप करने की नीड नहीं है, नोटबुक में राइट करो, क्लिक अ फोटोग्राफ एंड सेंड इट ऑन इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप नंबर. सो इट्स अप टू यू, बट yes, you have to submit your answer. So 5 marks question, 5 to 6 minutes time, start attempting.
Guys, 3 to 4 more minutes. Easy question, just to build your base. Guys, 2 more minutes. Start winding up your answers. Use chat section to submit your answers. Try to be specific. It's a mix of both specific and general points and more of knowledge based question rather than application based question. Guys, start submitting your answers. Let's discuss now. So question kya hai, a trust managing retirement benefits for a rapidly growing company has seen its funds growing significantly over the last 3 years. In this context, outline the factors that the trustees of the scheme need to consider while formulating their risk appetite. तो क्वेश्चन आपसे स्ट्रैटेजी का नहीं पूछ रहा. क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग कंपनी हैज सीन और उसका फंड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 3 years. सो आउटलाइन द फैक्टर्स जो ट्रस्टीज को कंसिडर करने चाहिए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द रिस्क एपिटाइट. ट्रस्टीज की रिस्क एपिटाइट किन चीजों पे डिपेंडेंट हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हमारी रिस्क एपिटाइट को इम्पैक्ट करेंगे. सो कैन आई से रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स जहां पर स्कीम को फॉलो करने पड़ते हैं. सो एनी लीगल कंस्ट्रेंट्स, any statutory constraints that the scheme needs to adhere to,
actually determine the scheme's risk appetite. So think of the factors that may impact the risk appetite of the scheme. So we can say any legal or statutory constraints that scheme may adhere to. What else? आपके लीगल कंस्ट्रेंट्स आपके रिस्क एपिटाइट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आपके रिस्क एपिटाइट को इम्पैक्ट कर सकते हैं? मे बी हम कह सकते हैं एनी रूल और एनी डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली डिटर्मिन्स मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड स्कीम, एनी ट्रस्ट डीड बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड स्कीम may also impact the risk appetite. So trust deed or rules or documents between management of scheme and trustees may also impact risk appetite. आपका रिस्क एपिटाइट इस चीज पे भी डिपेंडेंट हो सकता है कि आपके बेसिकली जो भी आई वुड से एम्प्लॉइज है, जो जिनको भी हमें बेनिफिट्स देने हैं, उनकी उनको हम कहते हैं बेनिफिशियरी, सो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है स्कीम से, आपने कितने प्रोमिसेस किए हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एक्सपेक्टेशंस है. सो प्रोमिसेस and expectations, this may impact the level of risk appetite. What else do you feel? So Shri Hari is saying free assets available in the benefit of the scheme. Okay, क्या आपका risk appetite इस चीज पे भी dependent है कि आपके पास कितने excess assets available हैं. So yes, we can mention free assets availability. Next, आपने बोला assets being invested by trustee, how volatile assets, diversification of the portfolio, nature of liabilities, if it is short term, risk will be low. लाइबिलिटीज में इतना ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, हम लाइबिलिटीज का हमने कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा आपने क्या प्रोमिसेस करे हैं या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बेनिफिशियरीज की, क्या रूल है, कितना बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड क्या कह रही है आपकी, स्टैट्यूटरी कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपकी फ्री एसेट्स की अवेलेबिलिटी क्या है. और फ्री एसेट्स में हम ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और क्या लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का. मतलब अगर हमारी स्ट्रैटेजी जहां पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड है, तो चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क आर लो. So chances of investment risk are low. That means I can have I would say a risky strategy as well. बट ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क एपिटाइट काफी कम हो जाएगा अगर मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है तो. So yes, these are the certain keywords that need to be there in your answers. So guys, do make sure to note down in case आप नहीं judge कर पाए तो. But do try to attempt. Even if you are able to make say just 1 or 2 points, it's okay. The point is that we should try to attempt at least. कि हाँ मुझसे attempt हो पा रहा है, that's something which is really important. नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. अब क्या सोच के इन्वेस्ट करती है? जब हम एक बेनिफिट स्कीम के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या मोटिव होता है? सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? जब भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जहां पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है. The main investment principle of any scheme is to select assets that are appropriate to your nature of liability, term of liability, currency of liability, plus it should maximize your overall return. So 2 points need to be there. Select assets that match nature, term, currency, uncertainty of liabilities, plus should overall maximize return.
कि मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज की मैचिंग हो रही है, और मैचिंग कैसे हो रही है, नेचर की टर्म्स में भी, करेंसी टर्म, अनसर्टेनिटी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में मेरा रिटर्न मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए. सो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल बिहाइंड चूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स is to meet these two particular objectives. So it should be clear to everyone. So guys, just quickly note it down, and then we are moving to the next question. Be more active, try to answer. Even if you write wrong, it does not matter, but the point is that you should attempt. If you are taking it live, you should attempt. Now let's move to the next question. ओके, सो अटेम्प्ट क्वेश्चन 5. अब ये इजी है, देखो. फर्स्ट पार्ट, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोवाइडर ऑफ डीबी स्कीम्स. अभी आप स्किप कर सकते हो, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. Second, outline key factors that the trustees of a DB need to consider when finalizing a fund's investment strategy. 4 marks के लिए. Due to recent financial turbulence in stock market, some blue chip stocks have fallen by more than 30% in last 3 months. Investment manager of a DB scheme which invests in debt and cash feels that it's the appropriate time to invest in the equity markets, as it would give enhanced return on assets in medium term to long term. Discuss the pros and cons of this suggestion. So second part में उसने investment strategy test किया. Third part में उसने बोला हम ये decide कर रहे हैं, आप बताओ ये ठीक है या नहीं है. तो इसमें आपकी investment strategy के factors plus specific characteristics of your different asset classes that we have discussed should be used. So third part आपका 8 marks का है. In short आपको total 12 marks का question attempt करना है. So 15 minutes time, start attempting.
Guys, 5 to 6 more minutes. Try to wrap up. Discussion वाले में, we need detailed points. Outline वाले में only keywords. Guys, start submitting your answers, everyone. So let's start discussing now. Everyone, put your answers, chat section. First part, state the principles of investment for a provider of DB schemes. Now, everyone knows this. Whenever it comes to principle, the two main principles are to maximize your return on your assets subject to a given level of risk.
to make sure that your assets are in match with your liabilities, be it in terms of nature, term, currency and uncertainty. इसके अलावा और भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं that we should be meeting our financial obligations, plus it should the return on the assets must be sufficient to meet the cost of the scheme. बहुत सारे और भी objectives होते हैं, but these are the two main objectives, one in terms of your matching and the other in terms of maximizing your overall return. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है. Outline key factors that the trustees of a DB need to consider when finalizing the strategy. So this is a good question. So what are the factors that the trustees of a defined benefit need to consider when finalizing a fund's investment strategy? तो क्या क्या चीजें इनको कंसिडर करनी पड़ेंगी when they are framing an investment strategy? So what are the keywords that need to be there in your answer? Any legal constraints? We need to check on the level of risk appetite. Legal constraints check कर लिए, risk appetite check कर लिया, tax का हमें दोनों के mention करना है, tax position of scheme plus tax efficiency of different assets in which you have invested. जो ऐसा assets आपको better tax advantages दे रहा है, आप उसमें पसंद करोगे invest करना. Then your nature of liabilities, term of liabilities, currency, uncertainty, ये तो points हैं ही, which we need to consider. So nature of liabilities, term of liabilities, currency of liabilities, uncertainty, your current level of diversification, ठीक है. तो हमें क्या क्या बोलना है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंसिडर करो, लेवल ऑफ रिस्क एपिटाइट को कंसिडर करो, एनी कंस्ट्रेंट्स इफ देयर आर देयर नीड टू कंसिडर दैट, नीड टू कंसिडर योर नेचर ऑफ लायबिलिटीज, टर्म ऑफ लायबिलिटी, करेंसी, अनसर्टेनिटी, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर स्कीम्स पोर्टफोलियो, टैक्स efficiency of your different investment classes, tax position of the scheme. So these are the factors that need to be there in your answer. Shri Hari says liabilities are generally real in nature. The term of liability can be either short term or long term. For active and deferred, term is long term. For retiree, it is short term. Hence, investment strategy will vary on the number of actives, deferreds, and retirees in the scheme. Regulatory restrictions imposed on the scheme investment strategy followed by competitor. Any tax advantages that the scheme is enjoying. फ्री एसेट्स अवेलेबल विद द स्कीम. सो श्रीहरि आपने क्या किया, आप पहले सेकेंडरी पॉइंट्स पर आ गए, उसके बाद आप प्राइमरी पॉइंट्स पर आ रहे हो. आपने रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन एंड में लिखा है, लेकिन इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. टैक्स एडवांटेजेस, फ्री एसेट्स अवेलेबिलिटी, ये सारे ठीक है, आपने पॉइंट्स ठीक लिखे, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, आप लायबिलिटीज की एक्सप्लेनेशन देने लग गए. सो लायबिलिटीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर सिर्फ फैक्टर्स बताने थे. आपको सेग्रीगेशन किया था, आपने बोला कि 3 तरीके की लायबिलिटीज है, एक्टिव है, डेफर्ड है, रिटायरीज है. रिटायरीज को हम वो होते हैं जो हमें जिनको हमें पेमेंट्स करनी होती है, एक्टिव्स वो होते हैं जो अभी स्कीम में कंटिन्यू है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डेफर्ड वो है जिन्होंने स्कीम को लीव कर दिया है बट उनको अभी हमें पेमेंट नहीं करनी है. सो आपने टाइप सेग्रीगेशन करी है, बट ये सब कुछ हमारा अगर क्वेश्चन 10 to 12 मार्क्स का हो और हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रेच करने के लिए बोले, तब तो ये सब कुछ करना एक्सेप्टेबल है. But just for 4 marks question where examiner is asking you the main factors to comment upon, if you start with this explanation, so your answer will become concentrated and you will not get more than 2 marks for this answer. So आपको इस पार्ट में perfect score करना है.
And I can assure you, like if you are very much smart in this sense कि मुझे कहाँ पर कितना लिखना है ना, that is the main trick behind clearing this exam. There are students who actually lose just 1 or 2 marks. They're not able to clear just maybe because of 1 or 2 marks, because उनको ये समझ नहीं आता कि हमें किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कहाँ पर स्टॉप लगानी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. पहले ये जज करो कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है. क्वेश्चन ने हमें फैक्टर्स पूछे हैं, तो हमें लायबिलिटीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देना. अभी आपने सिर्फ एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझाया, दैट इज बेसिकली टर्म ऑफ लायबिलिटीज. So we have lot of other factors and keywords that need to be there in my answer. So you need to comment upon those first. और अगर question का weightage ज्यादा है तो आपकी point susceptible है. As of now, no. Darshan says statutory, legal or voluntary restrictions, accounting rules, currency of liabilities, term, nature, institution, risk appetite, diversification needs, size of assets. So it's okay, Darshan, but अभी ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ notes में से या book में से देखकर attempt कर रहे हो. So आपके keywords ठीक है, but somehow just try to relate it with respect to the question that has been asked. Next, Vanan says nature of liabilities. Liabilities are of a long-term nature. Therefore, investments can be made in equity property. आपको नहीं बताना कि कहाँ पर investment करना है. आपने लिखा कि nature of liabilities. Liabilities are of long-term in nature. यहाँ पर आप खत्म कर सकते हो. Because question हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है what are the factors impacting strategy. Question ने investment strategy design करने के लिए नहीं बोला. जब तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के लिए नहीं बोला, तब तक मेरे आंसर में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना. करेंसी ऑफ लायबिलिटीज डोमेस्टिक ठीक है. रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, साइज ऑफ एसेट्स, करंट साइज, टैक्सेशन ट्रीटमेंट, टैक्स पोजीशन ऑफ द स्कीम, इट्स परफेक्ट. सो अभी 2-3 पॉइंट्स आप और लिख दोगे तो यू कैन स्कोर 4 मार्क्स. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम. नेक्स्ट पार्ट देखो, दिस इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ड्यू टू recent financial turbulence in the stock markets, some blue chip stocks have fallen by more than 30% in the last 3 months. Investment manager of a DB scheme which invests in debt and cash feels that it's appropriate time to invest in the equity markets as it would give enhanced return on assets in medium term to long term. So question में साफ साफ लिखा है pros and cons discuss करो. तो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? सिंपल, प्रोज कॉन्स. पहले आपने सारे प्रोज बता दिए या फिर उसके बाद आपने कॉन्स बता दिए. हम दिस इज द वे टू प्रेजेंट योर आंसर एंड स्पेशली फॉर IFO स्टूडेंट्स द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर मैटर्स अ लॉट इन योर एग्जाम. सो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन, इजी पार्ट डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस बेसिकली व्हाट कैन बी द प्रोज बिहाइंड दिस स्ट्रैटेजी. क्या कह रही है स्ट्रैटेजी का कि रीसेंट फाइनेंशियल टर्बुलेंस की वजह से स्टॉक्स के प्राइसेस कम हो गए और 30% से कम हो गए. तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर को लग रहा है कि अभी तक हम लोग डेट में, मतलब या तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे या फिर हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, तो क्योंकि अभी स्टॉक्स के मार्केट बहुत नीचे है तो इट्स बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन, ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न आ जाए आगे फ्यूचर में. तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? सो व्हाट कैन बी द प्रोज. लायबिलिटीज कैसी है हमारी? लॉन्ग टर्म. सो आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो इट कैन हेल्प यू टू मीट द टर्म ऑफ योर लायबिलिटीज. कैन बी राइट दिस? ओके, लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म की है. इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज विल हेल्प यू टू मैच ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज. सो सिस्टम टी हमारे माइंड में चलना चाहिए. जो हमने एसेट्स मार्केट का सिस्टम टी सीखा है वो इट शुड बी इन आवर माइंड, बट वी शुड नॉट राइट इट डायरेक्टली. What else can be the pros of investing, of undertaking this type of investment strategy? Maybe अभी तक आप लोग डेट और कैश में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे तो it will help you to provide diversification. मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, assuming कि आप लोग पॉइंट्स पूरे डिटेल बना लोगे. So it helps to provide diversification. It helps to generate higher returns compared to investment in debt and cash. मेरा फोकस सिर्फ कीवर्ड्स पे है. Try to make your points detailed using these keywords.
Plus you get inflation protection as well, because equities का जो return है that is real in nature, so we can say that we are getting protected against inflation. ठीक है, सो नेचर हमने बोल दिया कि रिटर्न हमें रियल मिलेगा, रिटर्न लॉन्ग टर्म में है तो बेस्ट मैच रहेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मीट करने के लिए, ठीक है, और हमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी मिल रही है, डाइवर्सिफिकेशन भी देगा, हायर रिटर्न्स भी हैं, प्लस अभी आप तब इन्वेस्ट कर रहे हो जो करेंटली अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट इट कैन ग्रो इन फ्यूचर एंड कैन प्रोवाइड यू द डिजायर्ड रिटर्न. So you are investing in blue chip stocks which are currently undervalued, so higher prospects of capital gain. ठीक है, सो दिस कैन बी द पॉइंट्स फॉर योर प्रोज. अगर हम लोग अब कॉन्स की बात करें, सो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस बेसिकली ऑफ अंडरटेकिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी. अभी हम लोग इस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स 30% फॉल हुए हैं इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टॉक्स 30 से ज्यादा फॉल हो जाए और आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो इट मे नॉट प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड रिटर्न. सो स्टॉक्स may fall by more than 30% in short term. So you don't have to assume which is given in the question. You have to think on that कि अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा. क्या आपके पास इतना रिस्क एपिटाइट है इस शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को फेस करने के लिए? Maybe costs are very high compared to investing in debt and cash. Management cost high रहती है. So high investment cost compared to investment in debt and cash. You require expertise for investment in this type of market. बिना expertise के आप नहीं invest कर सकते. Maybe less tax benefits compared to investment in bonds. वहाँ पे शायद कुछ benefits मिल रहे हैं हमें. ये भी हम बोल सकते हैं कि there can be regulatory restriction in terms of the limit of amount which you can invest in equities. So you need to check on this restriction as well. ठीक है, so these can be certain pros and cons. Swanan says equity prices recently have fallen and hence it could be a good time to invest to maximize returns. However, care should be taken while investing because there is a possibility of further fall. More investment can help diversify. Defined benefit schemes have longer term, hence investment could be a better match. So whatever points you have submitted, Swanan, seems to be perfect. बट एक इशू है मुझे कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन में आपने सेग्रीगेट नहीं किया. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट टू गेट गुड मार्क्स. So Shri, one more answer that I have received is that blue chip company stocks are stable stocks, so any investment in blue chip will give high returns. If market is all time low, market might bounce back. Investment in equity market offer diversification, especially collective investment schemes, but manager might lack expertise and equity market might further fall. So Shriyari, the points seem to be okay, but the points are less given it's a 8 marks question. So you need to work on more points. Otherwise, the way of presentation seems to be fine. Guys, all those who are attending, all others who are attending and not answering, please try to answer so that it will help you to understand where you are currently lagging in. अगर आपने कुछ नहीं भी देखा, ये आपकी पहली क्लास है, आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, कुछ भी नहीं किया है, तो भी it will, तो भी बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि these are something which you know, this is something which you know, तो कुछ तो आपके पास understanding है, ये कुछ तो knowledge है, ये with the help of which you can answer. So do try to answer even if you don't know anything, just to see कि अच्छा बिना पढ़े अगर I can write this, तो अगर मैं थोड़ा सा भी और efforts कर लेंगे तो what will be the level of my points.
So guys, just quickly note it down and then we are moving to one more question before we wind up. So just note it down fast. और आई थिंक चैप्टर 8 to 10 के नोट्स अपलोडेड हैं एंड चैप्टर 14 के भी नोट्स अपलोड हो गए हैं. सो इन केस आई मेरी साइड से चैप्टर 14 और 8 to 10 फाइनल है एंड नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन चैप्टर 11 to 13 notes. So all those who have joined just now, so guys, we will be sharing handwritten notes for every chapter on your portal itself. तो आपको कोई भी को रीडिंग को रिवाइज करने की नीड नहीं है. को रीडिंग का बहुत ज्यादा होता है तो एट टाइम्स वी डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू द एंटायर को रीडिंग, तो यू कैन स्किप दैट बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मेक द पॉइंट्स इन द नोट्स इटसेल्फ, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स. अब जैसे चैप्टर 14 है, क्या क्या फैक्टर्स है वो आपको दोबारा से को रीडिंग पे जाने की जरूरत नहीं है. मैंने चैप्टर 14 के नोट्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स मेंशन करे, तो यू कैन जस्ट रीड द फैक्टर्स, यू कैन जस्ट लर्न द फैक्टर्स फ्रॉम देयर. So next notes that we will be uploading is for chapter 11 to 13. जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोग मूव करते रहेंगे उस सीक्वेंस में नोट्स ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड होते रहेंगे. Now let's do another question. Okay, start attempting question 2. A high net worth individual has approached you for advice. He is planning to buy pieces of art by an artist whose work has received rave reviews in last few years. Discuss the suitability of investment for this investor. सो आपको ये बताना है कि इस टाइप की स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं. सूटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमें डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस दोनों पे कमेंट करना है फॉर 6 marks. स्टार्ट अटेम्प्टिंग. 10 minutes टाइम.
So let's discuss, everyone. Submit your answers. Okay, so question says a high net worth individual has approached you for advice. He is planning to buy pieces of art by an artist whose work has received rave reviews in the last few years. Discuss the suitability of the investment for this particular investor. So suitability जहां भी आएगा, as I mentioned, we have to comment on advantages, disadvantages. So let's start with advantages. What can be the advantages of this investment? So एक तो ये इंडिविजुअल कैसा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है. आपको पता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैव हाई लेवल ऑफ रिस्क एपेटाइट. ठीक है. सो अगर हम एक अपना a particular proportion of wealth हम आर्ट में लगा भी रहे हैं तो it seems to be fine because the individual has high level of risk appetite. So high net worth individual, high level of risk appetite, so seems to be fine with respect to the portion of wealth invested. Plus सबसे बड़ा reason of investing in this art instrument is that it can provide you diversification from your current asset classes. Return can be linked to your capital appreciation. So आपको as such इस piece of art में कोई regular income नहीं मिलेगा, but capital appreciation के बहुत ज़्यादा high chances है. और अगर एक high net worth individual है, तो उसका reason वैसे भी regular income के लिए invest करने का नहीं होता, उसको capital appreciation के लिए invest करना है. तो this seems to be suitable if individual is HNI. So HNI investor, high capital appreciation chances, no regular income. ठीक है. What else? Maybe you get some tax advantages. कुछ हो सकता है कोई tax efficiency हो इस type के asset में. So maybe any tax efficiency. We can also say कि it's a feel good factor. एक आप किसी एक पॉपुलर आर्टिस्ट का कोई बहुत बड़ा काम अगर आप ओन कर रहे हो तो बेसिकली इट्स अ फील, इट एड्स टू योर फील गुड फैक्टर वैल्यू. प्लस वी कैन ऑल्सो से दैट जो हमें रिटर्न मिल रहा है इट्स नॉट नॉमिनल. ऐसा नहीं है कि उसका डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लेशन के साथ लिंक है, बट डेफिनेटली द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन वैल्यू. द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बीट इन्फ्लेशन एज वेल इफ आर्टिस्ट पॉपुलैरिटी इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग. सो वी कैन से रिटर्न may not be linked to inflation but is expected to increase in value, is expected to beat inflation as well if artists popularity is growing. तो अभी आपको मेरे आंसर में क्या देखना है कि एवरी टाइम व्हेनेवर राइट आई एम राइटिंग वन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू लिंक इट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड. हमने हाई रिस्क एपिटाइट बोला, हमने बोला ठीक है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आप अपना वेल्थ का इन्वेस्ट कर सकते हो. डाइवर्सिफिकेशन में हम कुछ लिंक नहीं कर सकते. डाइवर्सिफिकेशन का हमने जनरली बोल दिया कि इट मे प्रोवाइड यू डाइवर्सिफिकेशन. फिर हमने एसेट से रिटर्न बताया कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है, जो कि सूटेबल फॉर एचएनआई इन्वेस्टर. टैक्स एडवांटेजेस मिल सकते हैं, फील गुड फैक्टर है, प्लस क्या है आपका कि आपको इन्फ्लेशन लिंक्ड रिटर्न मिल रहा है. एंड एट टाइम्स हो सकता है ये रिटर्न आपको बीट भी कर दे इन्फ्लेशन को बिकॉज पॉपुलैरिटी अगर आर्टिस्ट की बढ़ती रहती है. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? मार्केटेबिलिटी इज वेरी पुअर. आपको इजीली कोई भी बायर नहीं मिल जाएगा जो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो. सो मार्केट इज डेफिनेटली नॉट एज गुड एज कंपेयर टू योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स. You need to find basically people who are interested in buying these type of work of art. Plus जो मेरी demand है basically that is linked to your taste and preferences. So any change in taste or preferences will impact my demand, and any changes in demand can have a significant impact on the prices of these work. So I can say basically that price of the work is linked to I would say
demand, and this may be linked to taste and preferences. So इन टाइप ऑफ पीसेस का ना वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है. एक आर्टिस्ट कोई और वैल्यू लगा रहा है, दूसरा कोई और वैल्यू लगा रहा है, तो वैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. प्लस यू नीड एक्सपर्टीज. हम लोग जाकर ऐसे डायरेक्टली नहीं पीस ऑफ आर्ट खरीद सकते. ईच पीस ऑफ आर्ट इज यूनिक. सो एक्चुअल प्राइस आपको पता ही नहीं होता. Plus, there is a storage cost, there is a security cost involved in order to store this piece of art. So, definitely, it would try to reduce your return. So, expertise, storage, and security cost being there, valuation being subjective, actual price may be unknown. So, let me just quickly see what you guys have submitted. Okay, so Swanan says such investments are generally high risky given that it's difficult to determine an appropriate price of such assets. Therefore, there's a lot of uncertainty of returns. Perfect. Such assets do not generate any cash flows. Therefore, if the purpose of investment is to match a regular cash flow payments, and it will not be a perfect match. Considering that investor is an HNI, it appears that risk appetite is higher and could be looking for capital gain. Market will not be liquid, not marketable. Therefore, if purpose is to back the liabilities and a short-term investment will not be suitable. Taxation of returns could be complex. So, Swanan, whatever you have mentioned, all your points seem to be okay. बस मुझे एक particular चीज में issue क्या है कि आपने ना इसको ऐसा समझाया है एज इफ कि हमने पीस ऑफ आर्ट में इन्वेस्ट किया है और हम उसकी सूटेबिलिटी कमेंट कर रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि आपको एक एचएनआई इन्वेस्टर का बैकग्राउंड ऑलरेडी गिवन है. तो हम बार बार ये नहीं बोल सकते कि अच्छा अगर आपका पर्पस लाइबिलिटीज बैक करना है, आपका पर्पस फिक्स रिटर्न्स लेना है, आपका पर्पस कैश रेगुलर कैश फ्लोज है, तो ये सूटेबल नहीं. क्योंकि इन्वेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से जज करना होगा कि इन्वेस्टर को ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए. आपने बिल्कुल ठीक लिखा कि कैश फ्लो नहीं आ रहे, तो हमें ये बोलना है कि क्योंकि ये एचएनआई इन्वेस्टर है, उसका मेन मोटिव कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, ना कि रेगुलर इनकम. तो इस टाइप का इन्वेस्टर उसके लिए सूटेबल है. और उसने जनरली डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कोई रिटर्न्स कम आई वुड से रेगुलर इनकम या अपनी लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए नहीं किया. तो वहां पर आपके पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टर एंड देन कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी. अदरवाइज अगर मैं एक नॉर्मल आपका उठाऊं कि हाँ पीस ऑफ आर्ट में हमने इन्वेस्ट किया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, योर आंसर इज परफेक्ट. अनदर आंसर, Srihari says the individual has enough fund to purchase the art. If individual has well diversified portfolio, then investing in rare art is suitable. Individual might get a feel good factor by investing in art. However, individual may lack expertise. Valuation will be difficult, may involve cost for valuation, may involve cost for storing art, for protecting against theft, against rusting. Marketability will be low, may have to pay CGT while selling art pieces. If tax position is not good, investment will not be suitable. Expected return might not be as high as compared to other assets. So perfect, Shri Hari. आपने काफी चीजें मेंशन करी है कि उनके पास फंड्स हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो ठीक है, फील गुड फैक्टर है. आपने एक्सपर्टीज भी मेंशन कर दी, आपने वैल्यूएशन का भी बता दिया कि वैल्यूएशन इज डिफिकल्ट, कॉस्ट लगेगी वैल्यूएशन का, स्टोरिंग कॉस्ट बता दिया, प्रोटेक्शन कॉस्ट बता दिया, मार्केटेबिलिटी लो का बता दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ये भी बता दिया, टैक्स पोजीशन, रिटर्न पे थोड़ा और फोकस हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेगुलर इनकम. Rest a good answer. Darshan says price of art pieces, number of art piece available to buy, how exclusive or easily the art piece is available for buy, how long it can last, whether it can be sold to anyone or not. So Darshan, the way of attempting is completely wrong. Question आपसे पूछ रहा है advantages disadvantages बताने के लिए, आपके आंसर से it's looking as if you're just trying to comment on the factors, so it's not appropriate.
So some of the answers are really good. Some students are not taking pain to answer, but they are attending live. Guys, do answer. आपने चाहे अगर आज भी ज्वाइन किया है ना, तो भी आपको आंसर करना है if you are attending live class. And some of the students are trying to answer but not able to meet with the standards of answer, so it's okay. At least अगर अभी आप try करोगे, आपके पास time है अपने आप को improve करने का. So guys, do attempt. आपको नहीं पता what you are writing, what you are thinking may actually be appropriate for examiner or not. So it's always advisable कि अभी जितना भी आप practice करोगे throughout your entire attempt, make sure that you are doing your questions in written or in type format depending on the society which you are going through. अगर आप past papers वाली classes भी go through कर रहे हो, तो आप class को pause करो, attempt करो answer, और जैसे हमने discuss किया same आप check करो कि हाँ मेरा आंसर उस पॉइंट से मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. Content lectures is just one small portion of your co-reading, I would say, of your syllabus. कंटेंट लेक्चर से अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो. दिस इज द रियल चेक. यहाँ पर आप जब तक लाइव क्लास नहीं अटेंड करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि आपको एक्चुअली कितना प्रिपेयर्ड और कितना नहीं प्रिपेयर्ड हो. And these are the reasons that why a student is not able to pass, because he or she feels कि हमें बस को रीडिंग से गो थ्रू करना है और कुछ ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं. CP1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो ये सबसे बड़ा एग्जाम है, ये सिर्फ एक ही चीज मांगता है, दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस. सो यू हैव टू गिव 2 to 2.5 hours on a daily basis, and just think of the targets that we are giving you, plan your other commitments accordingly, and just start studying. अगर अभी तक भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है, तो it's high time to start studying for your April 2024 attempt. Okay, then let's wind up till here. So now you have 2 full days to complete all your backlogs, complete all your targets till date. So target till date is chapter 8 to 10, everything. Content lecture, X series lecture, November 2023 sessions, and chapter 14 content lectures. We will be continuing with more questions of chapter 14 in next class. So that's it for the day from my side. Thank you. No, we don't have class tomorrow.